Hi everyone. Okay, now we're talking about para-aminohippuric acid, and we know that this is a gold standard for testing renal plasma flow. तो अगर आपको renal plasma flow की एक value चाहिए, so that you can calculate with the help of para-aminohippuric acid. This is an exogenous substance which is injected intravenously, and this is an example of a secreted substance. What does that mean? कि para-aminohippuric acid, if you're going to inject intravenously, ये blood में आएगा, and then it will go to the renal blood, right? So 90% of the para-aminohippuric acid it is plasma protein bound. जो बाकी 10% है वो freely flowing है, ठीक है? जो 10% जो freely flowing है उसमें से भी 20% जो है it gets actively uh, not actively but you could say it gets filtered. 20% para-aminohippuric acid filter out होकर इधर आ रहा है, लेकिन जो remaining 80% रह जाता है जो peritubular capillaries में जा रहा होता है वो सारा 80% it's actively secreted. So it's safe to say that whatever amount of aminohippuric acid was injected here intravenously was SARA, it will come into the kidneys and it will be excreted. So whatever amount you calculate in the urine, that would be some of that 20% which was filtered and 80% that was actively secreted. So this would give you a rough estimate that yeah, this is the renal plasma flow. So if for instance you increase the plasma concentration of para-aminohippuric acid, then there will be increase in para-aminohippuric acid in the vein. What does this mean? This means कि अगर until a certain threshold value अगर आप para-aminohippuric इंजेक्ट किए वो आता रहेगा और actively secrete होता रहेगा क्योंकि यहाँ there are some you could say pumps जो कि active excretion कराते हैं para-aminohippuric acid के helps transport the para-aminohippuric acid from blood into the tubular lumen, right? लेकिन at one point जब वो threshold reach हो जाता है तो ये भी concentrated हो जाता है fully saturated होते हैं तो at that point ये पूरा para-aminohippuric acid it will start showing in the vein, right? So you have to uh, add on a certain amount of para-aminohippuric acid. I hope that makes sense. And moving forward, there are a few things that you need to know. The three cases. एक ये है, दूसरा is this and third is this. The first is about net effect of reabsorption and secretion. होता क्या है कि we know that the filtered load जो भी इधर आ रहा है that's a filtered load, it is the concentration of the solute into the GFR, ठीक है? अब inert substances that are added, for example, inulin, creatinine, ये inert substances हैं. These are neither reabsorbed nor they are excreted, right? So they're not neither secreted they're nor reabsorbed. इनकी ये अच्छी बात है. तो जितना भी filter हो रहा है वही इसका एक्सक्रीटरी लोड होगा. जितना भी फिल्टर लोड है ना वही इसका सिक्रीटरी लोड होगा क्योंकि इसमें से कोई भी रिअब्सॉर्ब नहीं हो रहा, कोई भी एक्टिवली सिक्रीट नहीं हो रहा. सो देयर इज नो नेट ट्यूबुलर मॉडिफिकेशन. सो इसका ये मतलब है देयर इज नेट इफेक्ट ऑफ reabsorption and secretion are basically nil. There is no net tubular modification. तो ये एग्जांपल इन सब्सटेंसेस का क्या है, इन्यूलिन एंड क्रिएटिनिन. इस केस में क्या होगा, जितना ही फिल्टर लोड है, जितना ही फिल्टर लोड है वही एक्सक्रीटरी लोड होगा, राइट? नेट रीअब्सॉर्प्शन का क्या मतलब होता है कि इसमें बेसिकली जो फिल्टर्ड लोड है ना दैट विल बी मोर देन द एक्सक्रीटरी लोड. इसमें नेट रीअब्सॉर्प्शन होती है, मतलब मेजरली दैट सब्सटेंस इज रीअब्सॉर्ब्ड. और इसके तो मल्टीपल केसेस हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम क्लोराइड, ऑल ऑफ दीज ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड दैट वी नो 100% है रीअब्सॉर्ब, ये 99% रीअब्सॉर्ब हो जाता है. तो इनके क्या होगा, ऑब्वियसली फिल्टर्ड लोड जो होगा ना ये ज्यादा होगा, एक्सक्रीटरी लोड, एक्सक्रीशन इनकी बहुत कम होगी. देन यू हैव द थर्ड केस विच इज नेट सिक्रीशन, जिसमें सिक्रीशन बहुत ज्यादा होती है. तो बेसिकली जो फिल्टर्ड लोड होगा ना दैट वुड बी लेसर, और जो एक्सक्रीटरी लोड है ना ज्यादा है. मतलब फिल्टर्ड लोड में उतना वो सब्सटेंस नहीं नजर आता जितना आपके एक्सक्रीटरी लोड में नजर आएगा. एंड दिस इज योर पैरामाइनोहिप्योरिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड प्लस बेसिस, जैसे कीटोन बॉडीज वगैरह. तो इसमें क्या होता है कि वो एक्टिवली सिक्रीट हो रहे हैं, तभी तो कीटोन बॉडीज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, तो दे आर एक्टिवली सिक्रीटेड. और पैरामाइनोहिप्योरिक एसिड भी यहाँ से बेशक जितना 10% फिल्टर होकर आ रहा है, लेकिन जो रिमेनिंग है वो सारा इधर आकर सिक्रीट होगा. सो yeah, this is about it. There wasn't anything special here, but it was important to get the information across.